Hello, my dear students. Today we will do some important questions from NEET point of view, and on the based on the topic total internal reflection. तो सबसे पहले previous year question for NEET. Question is from the 2023. The question is: the light travels a distance x in time t1 in air and distance 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for the medium? So we have to calculate the critical angle for that particular medium. So first of all, we have to calculate the critical angle. So we all know that the condition for the TIR or total internal reflection, that is mu is equal to 1 upon sine t. Mu is equal to 1 upon sine t. And ये भी हमें ऑलरेडी पता है कि what is mu. Mu is defined as the speed of light in vacuum upon speed of light in medium. So that is mu is equal to c by v, and that will be equal to 1 upon sine t. 1 upon sine t. So c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in any medium. So we know that speed, that is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो एयर में उस लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज एक्स इन टाइम t1. तो वी कैन से t will be equal to, or in place of c we can write distance upon time x upon t1. And similarly for v, for another medium, we can say it will be 10x upon t2. That will be equal to 1 upon sine c. After calculating, x and x will be cancelled out and we will get t2 upon 10 t1. That will be equal to 1 upon sine c. अगर इन दोनों टर्म्स का रेसिप्रोकल करोगे देन वी विल गेट sin c is equal to 10 t1 upon t2. So therefore ultimately we will get c is equal to sine inverse 10 t1 upon t2. So my dear students, this will be the final answer for the critical angle. So B option is the correct one. Now come to the next question. The question is for the given incident ray. आपके पास इस क्वेश्चन में डायग्राम के अकॉर्डिंग for the given incident ray shown in the figure, the condition of total internal reflection of this ray be the required refractive index of the prism. यहाँ पे बाय मिस्टेक इन्होंने प्रिज्म लिख दिया बट ये आपके पास प्रिज्म नहीं है, तो इस क्वेश्चन में लिटिल बिट मिस्टेक है यहाँ पे. तो यहाँ पे कोई स्लैब है हमारे पास, तो इस स्लैब का हमने अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बच्चों म्यू वी हैव टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट स्लैब. तो अगर मैं इस पिक्चर को लिटिल बिट दोबारा से अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वी कैन से दिस इज द स्लैब, दिस इज द इंसिडेंट रे, angle of incidence is equal to 45 degree, so bending toward the normal. इस पॉइंट पे हमने दोबारा से ड्रॉ किया एक नॉर्मल. रे आपकी हो गई
totally internal reflect. So let us suppose for limiting case we are assuming if this angle is angle C and C is the critical angle. This angle is R, angle of refraction. If this angle is R, this angle will also be R. Alternate interior angles. So now अगर मैं फर्स्टली इस पॉइंट को अगर मैंने नाम दिया ए पॉइंट के ऊपर अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो वी विल गेट बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री. वी कैन से sin 45 upon sin r. Sin 45 upon sin r. So in place of sin r, first of all sin 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2. तो यहाँ पे r की जगह पे मैंने रिप्लेस किया in term of C, so that we will get 90 degree minus C. So that R angle will be 90 degree minus C. So sine of 90 minus C is cos C. So let us suppose this is the equation number 1. So mu is equal to 1/√2 upon cos C. So my dear students, we all know that the condition for TIR, that is mu is equal to 1 upon sin C. Mark this equation as equation number 2. तो अगर मैं इन दोनों equations को करूँगा compare, तो ultimately we will get 1 upon sin C, that will be equal to 1 upon 2 upon cos C. So from this calculation part we will get tan C is equal to √2. Tan C is equal to √2. So let us suppose this angle is C. So tan C will be equal to perpendicular upon base. So that will be √2. Base की जगह पे लिखोगे आप 1. So by Pythagoras theorem the hypotenuse will become √3. So again from this figure, if mu is equal to 1 upon sin C, तो my dear students अगर मैं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग sin C की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूंगा तो I will get perpendicular upon hypotenuse. तो √2 upon √3, 1 upon √2 upon √3. तो √3 जाएगा ऊपर. तो ultimately we will get mu is equal to √3/2. So we can say C option is the correct one. So C will be the final answer. Now comes to next question. This is a very important question from examination point of view. A disc is placed on the surface of a pond which has refractive index 5/3. A source of light is placed 4 meter below the surface of the liquid. जो आपका source of light है, जो कोई point source है, that is below the surface of the liquid, 4 meter आपका surface से नीचे है. The minimum radius of the disc, so we have to calculate the radius of the disc needed so that the light is not coming out of it. So अगर मैं इसका एक हल्का फुल्का डायग्राम ड्रॉ करूं तो लेट अस सपोज दिस इज द पॉन्ड. तो पॉन्ड की टॉप सरफेस से 4 मीटर के नीचे लेट अस सपोज यहाँ पे पड़ा कोई ऑब्जेक्ट. दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ
4 meter. So let us suppose this is the incident ray. So according to the limiting case of TIR, if this angle is C, so the angle of refraction will be 90 degree. Angle of refraction will be 90 degree. Similarly, on this side, same diagram will be formed. तो यहाँ पे इसके ऊपर जो सर्कुलर पार्ट बनेगा, इस सर्कुलर पार्ट का हमने क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस. रेडियस. So if this angle is C, this angle will be again C. Alternate interior angles. तो my dear students, यहाँ पे आपका TIR का फिनोमिना अगर हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ TIR, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. म्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है 5/3. तो 1 अपॉन 5/3. तो अल्टीमेटली वी विल गेट साइन सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. 3 अपॉन 5. So if I will talk about this triangle, this angle is C, this distance is 4. So according to sin C is equal to 3/5. So according to right angle triangle, if this angle is C, so this distance will be 3 meter and hypotenuse will be 5 meter. So my dear students, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व हो चुका, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. so this value will be 3 meter. So this 3 meter will be the radius of the circular disc जो आपके पास वाटर की टॉप सरफेस के ऊपर बनेगी. तो रेडियस विल बी इक्वल टू 3 meter. So B option is the correct one. 3 meter. Now comes to next question. Yes, this question is quite important, and so now let's do it. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2. हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो मीडियम है हमारे पास, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, M1 एंड M2. तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second, and in the another medium that is 2 into 10 raised to power 8 meter per second. तो कीप इन माइंड कि ये जो आपके पास स्पीड की वैल्यू जिस मीडियम में कम है दैट विल बी द डेंसर मीडियम, एंड जो सेकंड मीडियम आपका M2 है दैट विल बी द रेरर मीडियम. तो रेरर मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड उसकी ज्यादा होएगी, एंड इन डेंसर मीडियम स्पीड आपकी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. नाउ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम M1 टू M2 मींस जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से किस तरफ जाएगी? रेरर मीडियम की तरफ. डेंसर से रेरर की तरफ. एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I. एंगल ऑफ इंसिडेंस I. If ray suffers total internal reflection, then calculate the value of I. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आई एंगल बनाएगी इन द डेंसर मीडियम, एंड इट इज वेरी क्लियर दैट अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 to 2 मींस आपकी जो रे है ना वो कहां से कहां ट्रेवल करके जाएगी? फ्रॉम डेंसर टू रेरर. मींस TIR का फिनोमिना 100% यहाँ पे एप्लीकेबल है. तो नाउ वी कैन से एंगल I should be greater than angle C.
So this is the foremost condition for the TIR to be occur. तो अगर मैं दोनों तरफ साइन से करूंगा मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी. Sin I should be greater than sin C. Now we know that we know that mu is equal to T by V. Mu is equal to T by V. तो C की वैल्यू आप करोगे रेयर मीडियम के अकॉर्डिंग. तो स्पीड ऑफ लाइट है जो वो रेयर मीडियम में कितनी है हमारे पास 2 into 10 raised to power 8, and in the denser medium that will be 1.5 into 10 raised to power 8. Powers will be cancel out, so we will get mu is equal to 2 upon 1.5. So this will become 4 upon 3. So we can say mu is equal to 4 upon 3. Now we know that according to TIR, mu is equal to 1 upon sin C. So sin C will be equal to 1 upon mu. तो mu की जगह पे अब जब आप यहाँ पे 4/3 सब्सटीट्यूट करोगे तो d जाएगा ऊपर. तो वी कैन से sin C इज इक्वल टू 3/4. sin C इज इक्वल टू 3/4. इस वैल्यू को जब आप इस कंडीशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो वी विल गेट sin I should be greater than sin C. C की वैल्यू 3/4. सॉरी, sin C की वैल्यू, इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होगी यस, साइन सी की जो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू आई दैट इज 3/4. तो वी कैन से आई शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4. So it is very clear that C option is the correct one. So that is a limiting case for the I. So I we can say that is equal to or greater than the sine inverse 3/4. Thank you very much.